इज़ रिया त्यागी। तो ये वीडियो शेयर करने का मेरा एक ही मेन रीज़न है बिकॉज आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू पीपल दैट यू रियली वांट टू enhance your personality and especially the women. So ये उन लोगों के लिए है ये वीडियोस और ये सेशन जो आगे मैं अपलोड कर रही हूँ जो रियली अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हैं। सो व्हाट इज़ पर्सनालिटी ऑल अबाउट? It's just not your outer beauty but it also includes your thought. मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, सिर्फ ये पर्सनालिटी के अंदर नहीं आता। It's much more than that. Personality is your aura, you know, the way you carry yourself. आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, दिस इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी इज़ ऑल अबाउट। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सफरिंग फ्रॉम अ ग्रेट ट्रॉमा, बट उससे आप निकलते कैसे हैं, कितने टाइम में निकलते हैं और कम्प्लीटली कितना अपने आप को आप हील कर सकते हैं, दिस इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस। अब ये दो बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं। किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें खुद का ही नहीं पता तो हम किसी और को क्या सजेशन दे सकते हैं। अब खुद के जानने में सिर्फ इतना नहीं आता कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। नो, what are your habits, what are your strengths, what are your weakness, this all plays a major role in knowing yourself. Self-awareness. So how many of us can really bet on this कि we know about ourselves? Because I can bet about 80% of Indian population, they don't know about themselves. I can. Self-awareness इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपने बारे में नहीं जानते सो वी स्टार्ट बिकम अनोइंग, वी स्टार्ट गेट इरिटेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल थिंग्स जिसमें इरिटेट होने का काम भी नहीं है। यू नो, वी डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप्स, वी डिस्ट्रॉय आवर मेंटल पीस। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज यू नॉट अवेयर अबाउट योरसेल्फ। आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है, विच लीड्स टू पर्पस। सो self-awareness, I can give you a simple tool by which you can know that how to get aware about ourselves, and which is very important in your life. You know, where you have to go, what you have to follow, what you have to do. You should know about it. Everybody. So this video especially for those women, I'm so sorry, for those women who have messaged me and they have taken that first step, towards their enhancement, their personality enhancement. So yes, self-awareness, I am going to give you a tool that is very simple and I'm sure everybody is aware about that, but still I'm going to say that just take a paper, take a pen, write down your dreams, what you always wanted to do. And it's not important that you can just finish it up in a week. No, it might take months as well. Write down, because we all have dreams and it's just not one. We have a lot of dreams to follow and a lot of dreams to fulfill. Write about what are the strengths of yours and write even your weaknesses, because strength we have, but the weakness we have to convert them in our strengths. Weakness होना important है लेकिन ज़्यादा नहीं, और weakness इसलिए important है because we can measure that where we are lacking behind. So this is all for today. Today, just write your habits, write your strengths, write your weaknesses, and write what are your dreams. And just to make sure, just to tell you, it's not important that you can just write it in a minute or in an hour. No. It might take you weeks to write it down. Take your time, because these are the things which are only for you. These are the things which are going to help you to become a better you. Thank you for watching this video. Please stay tuned for my next video. That next video will be uploaded within 2 days, because I'm going to cover the next very important topic, which is self-analyzation for you people. And thank you so much. Have a great day.